Good afternoon and welcome everyone from Center of Agriculture, Climate Change and Rural Economy at Pakistan Institute of Development Economic in this today's seminar on Pakistan's uh, National Fisheries and Aquaculture Policy for the next 10 years. We all know that agriculture sector is very important sector of Pakistan, contributing significantly in Pakistan's GDP and also providing an employment opportunity to a large labor force, around 37%. And fisheries and aquaculture sector is also very important for the Pakistan. Its current growth rate is around 1.42%, and with around 8,000 ton fish production annually. According to the Economic Survey of Pakistan, our last year's production was around 798,000 ton of fish production. So this sector is very important. This sector is very important for food security in Pakistan. This sector is very important for the export potential. This sector is very important for the livelihoods, and also environmental consideration are also important. But this sector remained uh, underperforming due to some governance issues, some institutional outdated regulations issues, and most importantly, the value chain development in this sector. Climate changes also have very serious implications on seawater temperature and on this sector overall. But those implications were not integrated into the policy level. But this seminar or today's policy seminar is particularly important because it represents the Pakistan's first comprehensive attempt in recent years, in last 6 months, years, to frame the coherent national policy through participatory bottom-up and consultative process involving provinces and federal stakeholders. So our today's objective, today's aim is not only to understand how this policy is framed, what is proposed in this policies, but to critically understand, critically reflect on what is realistically implementable, what is sufficient to transform this sector, and what are the current risks, gaps that can be addressed in future, or what is the way forward. So for this purpose, today we invited Dr. Kumar Mohammad Javed Iqbal Sahab. He is a well-known scholar, well-known professional in this field. He has a long experience of more than 24 years of experience in this field. He holds a PhD in environmental governance. He also served with the many renowned institutions, including the Food and Agriculture Organization, where he is currently serving as a senior policy specialist. He also remained senior researcher at National Institute of Maritime Affairs. He remained connected with Bahria University, and also remained the member advisory board member, so visiting fellow in number of national or international think tanks. He also published extensively in many renowned journals. So I invite Dr. Kumar Mohammad Javed Iqbal, sir. It's over to you. Please join here and walk us through this policy, Pakistan's Fisheries and Aquaculture Policy. Sir, over to you. Thank you very much for your precious time. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. I hope you are fine. And thank you very much for inviting me at PIDE for this policy seminar. So this is, of course, I'm highly privileged in this prestigious moment for me. I also acted as co-supervisor for one of your student regarding one of the research that was also acknowledged. Ms. Aksa Gul, she completed Masters in Public Policy with a research topic on ship recycling industry. So 2 years back. So I have somehow association with PIDE as well. So this topic is by virtue of my expertise on policy governance, by virtue of my expertise and experience on policy and governance. So I remained involved in these interventions for which somehow a summary is brief is provided by Dr. Faisal.
So recently, I basically spearheaded the process for the drafting process as well as consultation for the first ever policy in the history of Pakistan that has been promulgated and now in place. The promulgation was with the approval of provincial cabinet of Baluchistan. So the first ever policy in the history of Pakistan in fisheries and aquaculture sector is the policy of Balochistan province. That is the Baluchistan Sustainable Fisheries and Aquaculture Policy 2025-2020, 2035. So it was promulgated on 20th of February this year. This is today is the last day. So this was the year. And effort was started back in 2023, September. This was the first, on 25th of the September, we took that initiative and then completed a very detailed and inclusive policy development process that you learn basically as part of your studies here. And the same things I practically employed for the formulation of study, like bottom-up approach, what we normally criticize or critically analyze, that the bottom-up approach is not employed in Pakistan's foreign policy formulation, but this way, in this, we employed that. And generally, if you talk about the national policy, so for the national policy, there were a number of attempts were made in the past, but that could not success could not be achieved, unfortunately. So this time we have achieved a very serious commitment, and we have achieved a very high, yes, level of the approval process so far that never happened in the history. This last process is remaining, that's approval from the federal cabinet, and now the summary is being sent to the that level. So this is the background. This is the summary of the things so far developed. One provincial policy, and the other is the national policy. National policy status is the final step is remaining. So background and perspectives, as summarized by Dr. Faisal, and you also know there are some issues and challenges, and this sector remain neglected in the past, and the focus was not given considering various aspects, including the data. So we'll quickly go through first the presentation round, and then we would be having question answer from you. Okay, fine. So first, we need to see on the gaps. What were the gaps? Those were the driving force behind this intervention. Why this policy was needed? This is first and foremost important question. And why we developed the provincial policy. That was the first and earlier national level attempts were made, and this was the second attempt in the history of Pakistan. Now the other provinces also on the way to develop and put in place their policies. Basically, you know, this since PIDE is very narrow place after the Applied Policy Research Center at Karachi University. This is the second house for research, practical research, and applied, basically applied policy research. And this is nothing new for you. You are well-informed students. You have the basics background about the need for the policy, why it's needed for the vision, to set the vision and the long-term objectives, where once the commitment is there, then you set your plan, and then the also the implementation strategy in order to achieve the ultimate goal and objective of the policy. And this is the similar thing like what we put our house with a vision, future vision. This is the same thing. So policy, what were the driving forces? What were the gaps in the governance for this fisheries and aquaculture sector? In the history, I give you a holistic overview. In the history, when we were centric to the capture fisheries, there's a two things. One is the capture fishery, wild fisheries, and the other is the aquaculture, it's a farm fishery. Okay, two segments in the overall. If we go to the production side, then the consumption associated with the value chain and the supply chain, two both things. There's a slightly different when talking about the supply chain and the value chain.
So we will term as an integrated way during this today's presentation and discussion. The value chain will take this more focus or more important, and supply chain as an integral part of it. Okay, and I hope you have already knowledge about the difference between the two, supply chain and the value chain. So the both supply chain or the value chain for the capture fishery and the aquaculture, this is both important, but slightly different vis-a-vis different things required. One is natural system based wild fisheries, and naturally we have two type of fisheries in Pakistan. While talking about the capture fisheries of marine fisheries, that is dominant, and the other is the freshwater fisheries. That's the number two or the runner-up, you can say, in the overall economy of the Pakistan or the provincial economy. But when we compare both the figures, facts and figures, those are not somehow authentic at the moment because of the data issues. And that data that comes from the basic landing sites or the fish harbors at the marine segment, that's a major challenge. And once the data issues, while the capture fisheries, we are harnessing or we are capturing more than what is being reported. So many times more than that. And all the experts and the people or the other stakeholders, they are all agreed on this figure. That's how the data is manipulated or undermined at the harbor or the ports level. If the data is managed and streamlined, where your role is there, so that we can improve. And for the data management, we need to improve the governance. And currently there is there was a gap. That's this sector, because of showing very less figure in the national GDP. It's now in the current years is less than 0.5 million US dollars. Sorry, 5.5% of the national GDP. It's about 400 something million US dollars in the national GDP. This is almost when we're talking about at the policy arena. So that's the importance of this sector was not so much there. So because of the importance, the policy makers, they also think their approach is basically economic centric. Generally, in today's or if you take throughout the history, there's a three pillars of the sustainability or the sustainable development. What you all know about is economic, social, and economic. And historically, any country or any if your socio-ecological system, when you study it, you find that the economy is the driving force, is the foremost important. And economy is basically behind all the decision making. And other segments are generally undermined. So because of that. But if the true data is there, then you would be, is fact and figures would be quite alarming, particularly for the researchers. If you find out that it would be, manifold in the national GDP. That's underreported, basically. And second thing, due to various factors, second is the capture fisheries. Second is the farm fisheries. In the farm fisheries or the aquaculture, there was no success in the past. And success was because of there was a challenge of the lack of value chain locally established. And there were some issues vis-a-vis the cost factor involved for the feed and the seed supply. Although there are so many farms are there, but I had a meeting on 23rd with the Secretary Punjab Fisheries. Punjab government, after these Baluchistan's intervention and the intervention at the national level and the global need, and due to significance of the aquaculture, shrimp and others, and the having, due to information technology, flow of knowledge. So this has come to the knowledge that we have the potential, if on one way, if the resources are being depleted in the capture in the wild fisheries. So on the other side, we need to
develop some alternative livelihoods and alternative economic solutions. And that can be possible through the aquaculture based system. And for that, aquaculture establishment required to be established. Although there are some if you go in KP, there's a trout farming there. If you go in Punjab, carp fishes, this commonly grown. And in recent meeting, I was when they showed their fisheries information management system, although they are desiring some more support from FAO. So we were surprised to see that's about in thousands. In thousands, there are farms, fish farms. This being those are centric to the calf fish, but calf fish export potential or domestic consumption is slightly different. And another factor is the consumption about the health. While we are talking about the white meat or the fish in your daily dietary habits, so this component is also there. And the fact and figure, the data being reported when you divide on the overall population of Pakistan, this again I believe this is also underreported data. This at currently is 2 kg per capita fish consumption, whereby it requires to be enhanced in the dietary habits or to foresee the future transformation of the food systems. In future food systems, we would be facing difficulties in our staple foods. So fish meat would be the important factor that required. And currently, while we had one authentic report in 2020, that was reported in 2015 based on the 6-7 year survey. But now, after 10 years, I believe that this is not authentic. That was the FRAP survey report. There was a comprehensive stock assessment survey that was conducted by FAO in the marine segment of Pakistan. And that is not applicable in the stocks of the freshwater resources. But on the marine fishery resources, if you talk about the resources that reflects or that has pointed out that report, if you don't have, it's available on the net. I'll share with you. So please circulate to your students and the faculty to study that report as well. That report that's our fish resources are depleted almost. And despite that, after 10 years, the restoration and this entirely different biological cycles that has different dynamics. So we need, if this data is managed after every 5 years for those stocks, then we can infer what is the current situation. And then we can link it with the licensing based or the maximum sustainable yield. But before that, we cannot link it, the existing licensing, though those are unsustainable. So our consumption in terms of production, if you say, while we're talking about SDG on sustainable production and consumption. So our consumption in terms of production from the wild catch is unsustainable totally. And secondly, it is underreported. So those are because of the outdated gears and the equipment, those are in place, whereby if you talk about the aquaculture segment, this was totally underdeveloped, and that required serious attention. And there's a lot of potential, billions-dollar sector, this and the neglected one. Because of the cost factor, when you go for the shrimp farming, shrimp is recently, last year, during November 2024, it's about on 100 acres in Punjab. It's a marine shrimp. This is a saltwater shrimp that was grown. The production was 120 metric ton, and that was exported to 2-3 countries, including Vietnam and the Middle East somehow. And that was sold at a competitive market. Profit was there. But when you talk about its production is cost intensive. So because of that cost intensiveness, although its ROI is very short, this shrimp production is 4-month crop. And in 4 months, you can have, even in first or second crop, the ROI would be there. But
if you go for the freshwater shrimp, again, this is very cost intensive. This slightly production cycle is slightly bigger than the marine shrimp, but the ROI is faster than the marine shrimp. This is very expensive item and is very nutritious element. So because of these, and these are possible now, we have achieved success stories in Punjab, successful trials. So in the past, these cost factors, cost balance was remain question mark. There was so many pilot studies, there was so many farming were attempted, but success could not be achieved. And last year we had some success stories. In the past, our wild catch for the shrimp farming, shrimp, that was, we had the biggest market in USA. Pakistan was the biggest supplier, but nowhere in the list. If you see the production and export, is export to the various countries. So Pakistan is nowhere there in the list, very at the bottom side. And in the 1980s, or if you go and see the data, this Pakistan was among the top listed countries for the export of the shrimp. And that market was captured because of outdated practice and because of various aspects in the wild catch and the supply line. Those the that's interest of, because now it's a consumer economy. Consumer is well aware of about the health and other aspects. So because of those things, so those export was halted or very reduced to minimum level. And even export to Europe, fisheries and even for the shrimp was stopped because of our practices and our wildcat procedures. Those were not up to the mark at international standards. These were the reasons. And nobody was there to resolve these issues and to have negotiation with the international counterparts to showcase our system that it is at par with the international systems and procedures. So our export was halted, and the remaining export, what is being reported annually, is to very developing countries like Vietnam. We are exporting, or somehow it's Europe, and our doors for Europe. This is the biggest market for our wild catch and even for the shrimp and other items, including so many other items of the marine and others. So that's not open. And even you can go for the value addition for the fish-based products. And there's so many products, this is highly valuable, very expensive items. So we were not focusing on because of our export limitation. And export limitation, that market was captured by Ecuador. Now Saudi Arabia is also in the race. India came, Vietnam. So these are among the top listed exporters for the shrimp, one item. And there are so many other items. And they required to, at international level, you need to showcase your system and procedure, the way of the governance, institutional procedures in place, how this sector is being governed. And this was the neglected sector. This remained part of, reported as part of agriculture economy in the past. Then in some provinces with the livestock, in some province, it was earlier with Punjab, it was with forestry wildlife. And now, considering its importance, now they have created recently during this December, they have created Punjab government Department of Aquaculture and Fisheries. Aquaculture, as you know, coming first, aquaculture and fisheries, the more focus on aquaculture. So these were the driving forces. That's, you need a policy document where your vision is written, where your governance mechanism is there. And some people, they talk about that the fishery subject after devolution, this facing challenge, but fishery was already a devolved subject. There's only few things after the devolution that have come across was the governance related matters at the in the marine segment. There was some overlaps. So there was earlier the fishery officer role was given to Pakistan Maritime Security Agency, that is entrusted to maintain law and order at sea. But
after the devolution, the provinces, they demanded that since fishery is purely the provincial segment, while we are talking about marine fisheries, 12 nautical miles at sea from the baseline. 1 nautical mile is about, you can say 1.8 kilometer, or you can roughly estimate 2 kilometer. It's about 24 kilometer inside the sea from the shoreline. I don't know how many of you have seen the sea in Pakistan or abroad. I don't know how much you are aware of the morphology of the shoreline and the sea. So how many of you have seen already sea? Can you raise your hand only? Oh, mashallah, 4 5 people are there. So there is a percentage like fisheries in the GDP. The same. So it's less than that. So despite that, it's a good in number. So that's the provinces they demanded. That's fisheries provincial subject. So we will be maintaining our own order at sea for the fisheries, because there were some issues vis-a-vis the role of the PMSA, and also the coast guards. They were also involved in preventing the trafficking, and also trafficking and other जो आपके drug smuggling through these borders and in the water. So there were some complex issues of governance and the role of different organizations. So, whereby the federal entities which are maintaining federal institutions, security and surveillance at sea, they were not giving this, they were not of the view to surrender this role. But it was given to provinces in the legislation, in the constitution of Pakistan. So I'll share, these were the challenges. What are the roles? What are the competence or legal competence of the federation and the provinces? So although law of land is very clear, but there was some ambiguities while the institutions, they were entrusted to implement religiously, and that was because of the coordination gaps, coordination mechanism at the federal and the provincial level. And these were the challenges together with this pollution factor, climatic issues. Pakistan is highly vulnerable, and when we're talking about the water ecosystems for the fisheries growth, so those are also vulnerable. And those are not only the vulnerable areas geographically from highland to the coastline. In highlands, you have trout and other fish. This highly valuable and very attractive item and very expensive item. In the marine, if you go along the coastline, the coastal population, not only the coastal ecosystem is vulnerable to climatic effects, but also the fisher folk, those residing, and the local population is highly vulnerable. Their livelihood is totally dependent on the sea. And because of that, due to variation, this highly adaptation and resilience is required, not only in for their livelihood, for the infrastructure, for their day-to-day operations at sea. In the past, there was one early warning system established at Goa by UNDP, but this is not functional so far. So this, if any variation at sea, there and in the climatic variation, so their life is at high risk and threatened while they are doing business at sea. And at sea, it's a matter of, it's not a matter of few hours, but it's a matter of sometimes a number of days, like weeks. They remain on board at sea for fishing purpose. And during that fishing, again, their temporary storage, outdated practices. Because of that, this international acceptance was not there. And luckily, because of these all initiative, while we took initiative for Baluchistan, this was the first attempt. And when we had a meeting with the PMSA's DG, so his first question was that the province cannot promulgate this policy. So while we are talking about bottom-up approach, so I had conversation with him myself that I gave the example. This one house hold is there, and there is a lord of the house who is responsible, and there is another person who is the lord of the village. So who is
the right person to set the vision of the household? Then he answered that is because policy is a kind of vision, and then you go for your strategies and course of action for years to come and to drive your own mission. So he said that this is the lord of the house, is the owner of the house, who is responsible for that particular house, this expense and all that. So he is the person, right person to determine its vision. And then that can be integrated with the village vision if a communal vision is required. Then I said, okay, this household is like the province, and country is like your village. There's a multiple houses are there with like provinces, if you take example. So why a province? When is there is a logic, and there is a requirement that's a household owner is the right person to determine and set its vision and policy. So why not a province can do it, whereby the sector is provincial? So then that's only the issue with the roles. That's grasping roles of others. And there's so many other things involved with these roles. Not only the security layer, if only the question of security layer is there, then security layer is everywhere present. Federal and provincial agencies are there in Punjab, in KP, and other provinces. That's why at sea this is highly, was negotiated. So then we had we bridged the gap between the negotiation between province and the law enforcement agency at sea, and there was a conclusion. Finally, that issue was resolved, and that was a policy issue integrated into the Baluchistan policy. And Baluchistan policy basically provided a foundation for the national policy. And because the provincial, and this has been proven when we're talking about the bottom up approach, when you come up with bottom up approach, you step by step resolve the issues, and ultimately no issues there, and your national vision is created. So this has been proven in the policy formulation of Baluchistan and also the national one. And because of the promulgation of Baluchistan policy is the first step, the national policy, it bridged the gap. Though there was some remained concerns from the province Sindh in the policy, they did not give the written comments. And in our national workshop, you were there, Dr. Faisal was there, and in the panel discussion, province Sindh mentioned that we have certain reservation. And then we convened another session exclusively for the province Sindh. And then thereafter, there was a international peer review process and the final technical working groups meeting held on 20th November recently, last month. And that was the overall policy was validated, in which all the technical group members were there. So these were the basically gaps that I have described on this slide, although extempore I described, so I did not read through these, but these are the basically. So this was basically what I have already briefed, that this was the, based on the gaps, this was the desired outcome and approach for the policy development to improve the governance through coherent policy at all levels. So we try to create coherence, 100% coherence with the provincial policy and the national policy. And how this happened, I'll also, when already I will mention the provincial case and the federal case, but I'll also brief you very quickly on the next slides. Capacity building. Once we set our vision where about this at the national provincial level, the vision that, then the next step is the course of action, strategy and course of action and allocation of funds. While we're describing these things, so there were some experts and there were some stakeholders. They were of the view that you need to allocate the fiscal part. You need to also include the financial part, funding allocation in this document. So it was agreed upon finally. We were of the view that the policy should be, your vision statement should be separate. Once this is approved, if you give, financial calculation at this stage, the required resources,
you will be showing a big, fear that from where these resources will come. So first you set your vision that these steps would be given, set your priority, short term, long term, and medium term, and then come to the next step for the fiscal allocation. So research and extension services, although in the agriculture sector you have studied, this very good agriculture extension service setup has been evolved over a period of time. Its effectiveness today, still improvement gaps are there, but in fishery sector is totally question mark. So the objective was to promote this sector this aspect as well, research and the extension services, develop a value chain that's not existing at the moment, development of resilience infrastructure and other facilities whichever required for both capture and the farm fishery, and manage the cross-cutting issues, including all your environmental issues, your labor issues, social issues, women or gender issues, or climatic issues. So this quickly, I give you this was after realizing these gaps and the need. So this was the initiative taken by basically you would be having question in your mind, why Ministry of Maritime Affairs spearheaded this process? This is a question mark. After even before the devolution, fisheries at with the federal domain, capture fisheries is only after the 12 nautical miles at sea. Beyond that, so that was the reason, and the Fisheries Development Commissioner Office is housed at Ministry of Maritime Affairs. And rest, and then export related things, certifications and others. You need, when you export your fisheries or fish-based product, you need a health certificate, and that is issued by the Marine Fishery Department for the export purpose. So because of this, these things are with the Ministry of Maritime Affairs, and that was the need. And earlier there's some attempts made by the Ministry of National Food Security and others. So because the mandate was with the other office, so there was some institutional rivalries in the past. So we tried to resolve these rivalries. We settled things vis-a-vis defining. For that reason, although law of the land was very clear, but we tried to create a consensus through a robust procedure and consultations. So this was the procedure, the development process we adopted. Earlier, we had this on the left side, the policy document in hand that was produced with the technical assistance of FAO, but through Ministry of National Food Security and through Fishery Development Board. And after devolution, this was one of the desired, provinces desired that this FDB should be abolished, whereby the research and development or the Fishery Development Board remained in all these kind of activities. And if you talk about the sharing experience between the provinces from international level, there's a need for a national entity. So when we analyze the federal competence, so we find out the roles for this FDB, and that were basically they had the activities in the past based on that, and also the nature of the institution. So we try to keep intact the Fisheries Development Board, and now there is a consensus that it will be kept intact. Fishery development now is with the fish. Basically, it will be doing research and trainings, advocacy, capacity building, all that, and sharing experiences. So we produced this, basically this policy document was not acceptable, that was produced in past. And then there was an inland policy strategy that was developed another time by the FDB. And that was not acceptable although it was prepared draft, it was not acceptable by the provinces. That why FDB? This is the provincial segment. So because of this, so we understood these issues not with the project mindset, but with the practical mindset. Earlier, the attempts were made only the project, the consultant approach. So in this effort, the institutions, they remain involved on the practical approach. And because of that, we got this level of success. So we produced an initial draft, we circulated to the provincial, although there was a nationwide consultation there.
And in first preliminary meeting, we agreed upon that these two documents will be considered as zero draft. And also the recent consultation that is serving both marine and inland for the that was done in Baluchistan, and also consultation held in Karachi as well. The Sindh province also remained involved, and the federal institution remained involved. So we'll consider that as a foundation for that this process. So based on this, we produce an initial draft, and that was circulated to all provinces and stakeholders widely. We collected the written comments as well as the verbal input through deliberation in the consultation. So after that provincial consultations, we had sessions at KP, Lahore, and Karachi for both the provinces, here for GB and AJK as well. So then we had first draft, we produced the next advanced version after incorporating the comments. And that was again circulated, and we held a national level consultation in July, during July, and in which you were also there at Islamabad. And in the national consultation, we got some feedback that was incorporated. After that incorporation, we held also a meeting with the Sindh province, and those things were also integrated into that. Then we sent it to the international expert for peer review. And we got some comments from international expert. Those were integrated, incorporated in the policy document draft. And then we held a validation meeting for the through technical working group on the 20th of November this year, last month. So in which that was after a few comments, I think 13 or 14 comments from the provinces. Those were incorporated. There was some addition, deletion, mostly some deletions, and some refinement, just only wordings and others, not major change. Then this was adopted. And now the final step is for through the federal cabinet's approval. And this draft will be submitted in the coming week, inshallah, to the federal cabinet. Policy focus basically is on the responsible use through adequate governance as the foundation for access to resources, how the resources are being accessed, and then sustainable management and resilient development. Development, whatsoever the infrastructure, whatsoever the things, that should be climate resilient. And the management in all way, it should be sustainable. This is the basic approach. And responsible use is the driving force. That's we need to act in a responsible manner. And this is totally aligned with international code of conduct, including the FAO's code of conduct for the sustainable fisheries and aquaculture. So basically, we address, I told you, federal provincial competence. This I quickly give you this slide. These slides would be with you, so you can go through in detail. This is a federal competence. For this, we hired an international legal expert, although law of the land is very clear. And this is in our habit, in our attitude, that we don't listen our people or what our law is saying, that's clear. When a foreigner is saying something, we blindly trust. I'm telling you that even if in this house, I believe that there are so many of you have outstanding intelligence. But not all, it's not naturally possible that on the same level, but maybe slight difference. All are, I believe, very intelligent. That's why you are here. But some are exceptional case as well in this classroom, I believe, in various sectors. Maybe someone would be having in one sector, the other one would be having in another sector. So these brains are basically the future of the nation. And when these brains, even with very valuable and very crystallized form vision and strategy actions, suggesting the way forward things, or on the right track, they're putting things, but the people would not listen. They only criticize. When a white body person, you can say is a white elephant, because they are basically they are getting very
huge amount of our money from our resources. So it's the white elephant. When we are saying few words from their mouths, we blindly believe, oh, that person said this. This happened also. Man think that, oh, Christian Buger said this. We should go for to create WIORA, Western Indian Ocean Association, and like this. So it's said by Christian Buger professor. He's a like assistant professor, like what we have Dr. Faisal, if he is saying something. But if Dr. Faisal would be saying something at international fora, that would be having very high value. But in Pakistan, even the same thing would be having zero value. So this, imagine, for us, this is very unfortunate. Unfortunate. But we have proved this, despite all these barriers, we come to this narrative that this policy was needed, and everybody would try to bring on the same page. So these were the competence, federal competence, this marine fishing, fisheries, and mariculture. Mariculture, if you go for the aquaculture inside the sea directly, it's a mariculture card. But on coastal areas, this coastal aquaculture, this is slightly different terminologies, but it's a form of aquaculture. Beyond ये मैरिकल्चर वो नहीं करना शादी वाला कल्चर, ये मैरिकल्चर वो एक्वाकल्चर की फॉर्म है. So beyond territorial waters at sea, including development of necessary infrastructure, is a 12 nautical miles से आगे. Nationwide provisions and system arrangement for research, data, knowledge, management, capacity building, advocacy. Here, role of FDP fits. So rationalize things where the role, and if one thing is having a very productive mode, then it should be protected. But we damn care about that. We have our own, we want to our own say, our power. So that should not be the attitude. National mechanism, like international treaties, convention, and agreements, is national purview, interprovincial matters and coordination. Who will be doing such things? Replication of success stories from one province to other. So again, FTP's role there. Import and export, this again with the federal domain. And if you go next, you see interprovincial trade and commerce. These all the things, they are requiring your research, maybe MPhil thesis on each and every aspect. If you produce 1 dozen research theses, MS theses from these federal competence and the provincial competence, I think you would be creating another success story. You will be unfolding the various aspects and in promoting the agenda of this sector. Each and every line is giving you a vision that you can conceive your research topic if some MPhil students are there. MPhil research, why I am focusing on the MPhil students? Because it's a 1-year research. After 1 year, your research would be saleable in the market. So this is a kind of thing. I encourage you all. The contents of the policy document, I'll forward you the updated version, and please circulate to all. Okay. These are the contents. What I have told you, these things have been incorporated in various sections. Like I'll give you quickly that exemption of duties. This is the most attractive thing is that this sector, first we declared it in the policy as industry in provincial, despite many difference in opinion, we included in the policy that it will be declared, because this is the provincial government's policy, not only one sector's policy. When talking about policy, policy is the government's policy. One sector requiring other sectors input like export. If commerce, Ministry of Commerce is required, this is also integral part of this policy. This is not only the fishery department policy. This is the federal government's policy, basically. You need to be very clear on that. And the same thing, based on that the fishery sector was declared as industry in province Baluchistan first. And secondly, we also included in its legislation. All outdated legislation we have revisited, and all are basically those are replaced with the fresh. Those all are repealed. But repeal would be practically
enforced after approval from the Provincial Assembly. That is awaited only. Earlier, it was approved from the Provincial Cabinet and also Parliamentary Committee. Once the Parliamentary Committee approves the agenda item, I think there was some queries on there's some ports and harbor related authorities were dismantled basically through legislation and also in the policy vision. And the directorates are created. It's a more productive mode should be there. So there is some big policy decisions in Baluchistan fishery aquaculture policy. And you will find that most of the contents, one person wrote in the comment, there's 40% of the contents are same for like provincial policy. So then we responded that query. Since it was agreed, Baluchistan's policy would be serving as the foundation. Some overlaps are there, jurisdiction. This is not a research paper where you need a novelty. That's a new knowledge addition. This is the use of the knowledge basically in the policy. So if something has already settled, so there is no need to reinvent the wheel. If one thing is settled, like the role of the PMSA and the fishery department is settled, then there is no need to reinvent the wheel. That's the same thing should be replicated in the national policy because it has already been decided. So these were the things exemptions. The fishery sector has been declared as industry, and then at the national level, it has been declared as an industry. And because of these efforts, now this sector is getting some importance into the limelight. And in future to come, this would be serving practically in increasing your GDP. And I believe if the current efforts on the aquaculture, alternative livelihood, continues, because of this was the first step. Then KP province, they approach FAO to provide some expertise and the resources for a detailed mapping study of the KP province. And I am basically the lead person managing that project as well. Currently, we have also given that project to FDB to build capacity of the FDB as well, to utilize this expertise as well in the province KP. And the entire KP has been mapped, survey has been completed. And now this next phase is validation. I would also invite you to come to the validation phase. The survey has been done and the mapping that will be, we will be having infographic information, the potential areas where the aquaculture trout farming can be possible in the pockets, in the valleys, and where if one investor, big investor from Karachi is interested in the trout farming, but he does not know where it is possible on ground in the hilly areas. Some local people might be giving some wrong information. His decision making would not be there. But once this mapping, based on this mapping, the infographic sheets would be there. So with the reliability and authenticity, with the FAO's name and the government name, then the the investors, those are sitting outside even country, they can have decision that, okay, in this pocket I'll invest for the trout farming. And then the infrastructure requirement and needs, those are also clubbed with that, being clubbed. In survey, we surveyed all these cold, semi-cold, and the warm water fisheries that are possible within the province KP. This is one KP's example. Now, based on that, province Punjab, they also desired us to create a master plan, a master map, spatio-temporal mapping on the same pattern for the entire province Punjab for aquaculture development, practically to marking the areas for the freshwater shrimp, freshwater carp fish or other fish, high value fishes, and also for the marine grade ship where it's possible. So map out and strategize the pockets and future need of the food resources, domestic and as well as the export need, how that can be strategized. So this is another development. I'm sharing with you the latest experience that's underway. And in such a kind of things, if you can also put into you can also give your roles
towards this cause and promotion of this sector, it would be valuable research. So for the purpose, this an apex council at the federal level, provinces may have their own. So provinces in Balochistan, this apex council was envisioned in policy and then included its creation in the legislation, new legislation. And soon it will be practically in place. And that's what for the determining vision and day-to-day affairs and to move forward with the agenda. Once these kind of organs, new organs would be there, this sector will be promoted. So establish coordination mechanism, MCS, maritime, basically monitoring, control, and surveillance. This is basically highly required to cope with IUU fishing. IUU is illegal, unregulated, unreported fisheries, fishing at sea, and also the MCS also important. While we are talking about the disease and other calamities, so early warning systems, etc., it's integral part of this is for the inland resources as well. So since we are running short of time, I'm also receiving call from the MoMA. So I just wrap up this key issue. We also resolved the conflicts of registration of fishing vessels. That's also linked with the traceability component, licensing, certifications, and leasing, how this would be there. Post-harvest management, value addition, quality standards, fishing operations, international trade. Because of these initiatives, America, USA has recently recognized that our governance system is at par. And now the trade is open for a particular period. This, I think you also received that news from the ministry. So finally, the current status, I already briefed you. This is the status. And thank you. We may have question answer very quickly if you have in your mind. Very much for this insightful discussion on a new area where people are not very much aware of the fisheries and aquaculture policy and fisheries sector. We usually talk about the agriculture sector as a whole, but not how we need to focus on separate sectors. Okay. मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मजीद लाइवली करने के लिए इसको जो है ना बाइलिंगुअल कर लेते हैं अभी थोड़ा सा, जी ताकि क्विकली जो है हम इससे प्रोसीड कर सके। अच्छा, इससे मैं क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऑनलाइन अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हम लाइव क्वेश्चंस के अंदर जो है ना हम उनको स्किप कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अतहर इसहाक साहब, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। Thank you very much, sir. I'm Dr. Fisheries Haq, Trade and Investment Counselor from the Embassy of Pakistan in Warsaw. सर सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि कंवर साहब ने काफ़ी कसे नफ्सी से काम लिया है और अपनी अचीवमेंट्स इन्होंने नहीं बताई। तो ये है कि इस साल जो है ना फर्स्ट टाइम पोलैंड को हमारी फिशरीज़ और प्रॉन्स की एक्सपोर्ट जो कि ना शुरू हुई हैं। तो ये गुड न्यूज़ है और आगे इसमें इजाफा जो कि ना मज़ीद हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि तिलापिया has a great potential to be exported in Poland. So we should make some strategic maneuver in this case. So second, मेरा ये एस्पेक्ट ये है कि जो पॉलिसी में एक शायद हमें चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ जीआई इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है। तो बांग्लादेश ने अपनी पल्ला मछली, जिसे वो हिल्सा कहते हैं, इसके अलावा रहू, इन्होंने इसकी जीआई टैगिंग ले ली है। हिल्सा जो है ना पाकिस्तान में पल्ला के नाम से है और रोहू पाकिस्तान में भी रोहू के नाम से है। तो इसमें है कि ये ना हो कि फ्यूचर में हमारी फ़िश यहाँ पे एक्सपोर्ट ना हो सके, या जो बासमती राइस के हवाले से कोई सिलसिला हुआ है वो यहाँ पे हमारे साथ ना हो जाए। तो इसमें मेरी सजेशन है कि जो हमारी फिशरीज़ हैं उनकी जीआई इंडिकेशन जो कि ना उसका कंपोनेंट उसमें ऐड कर दें। तो दूसरी एक मेरी सजेशन ये है कि कैवियर प्रोडक्शन जो है ये एक इंक्रीजिंग मार्केट सेगमेंट है, जिसमें काफ़ी ममालिक जिनका टेम्परेचर और क्लाइमेट हमारे जैसा है वो इसमें आ रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जॉर्डन, इज़राइल, वियतनाम, वो जो कि ना उन्होंने कैवियर की फार्मिंग जो कि ना शुरू की और इस वक्त मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं और कुछ एक्सपोर्ट तो $100 मिलियन तक पहुंच गई है। तो इस एक मेरी सजेशन है कि फिशरीज़ जो इन ममालिक का टेम्परेचर है वो पाकिस्तान के बराबर ही है।
तो कई फिशरीज जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर, लाइक अगर पाकिस्तान की मैपिंग कर दी जाए हमारे वाटर की टेम्परेचर के हवाले से। तो आई वुड सजेस्ट दैट डेटाबेस ऑफ द वाटर कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान इट शुड बी इंक्लूडेड इन द मैपिंग ऑफ दिस एरिया। नंबर सर थर्ड एक सजेशन है कि जो केजिंग फार्मिंग है दैट इज़ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट किया रिवर्स के ऊपर पंजनत फिश के अंदर, पंजनत हेडवर्क्स के अंदर, जो कामयाब रहा। तो इस वक्त यह है कि समंदर के अंदर भी यूरोप के अंदर केजिंग बहुत हो रही है और सैल्मन फिश इसकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरी सजेशन है कि इसको भी ऐड कर दिया जाए सी फार्मिंग को इस एस्पेक्ट के अंदर। और सर फोर्थ सजेशन मेरी ये है कि गेम फिशिंग में थाईलैंड जो कि ना काफ़ी आगे चला गया है और उन्होंने दुनिया की जो बड़ी बड़ी जितनी भी फ़िश थी, लाइक जो मिकोंग कार्प थी, मिकोंग कैट फिश थी, रापीमा थी, वो अपने यहाँ लेकर आए रिजर्वॉइस के अंदर और उन्होंने उसकी गेमिंग अलाउ की। तो अब यहाँ से अच्छे खासे टूरिस्ट जो है ना पोलैंड से वो थाईलैंड जाते हैं वो फिशिंग करने के लिए, क्योंकि यूरोप की फ़िश इतनी बड़ी नहीं है। तो एक मेरी सजेशन ये है कि गेम फिशिंग के हवाले से भी जो कि ना पॉलिसी में कुछ ऐड कर दिया जाए, ताकि है कि ये पाकिस्तान के लिए कि ना फ्यूचर में हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को लोकल और इंटरनेशनल इट विल बी बेटर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी अतर साहब, बहुत कंप्रिहेंसिव आपका जो सजेशंस हैं। इसमें जो जियो टैगिंग के हवाले से आपने बात की पहले फर्स्ट जो है, तो इसमें हमने जब ट्रेसेबिलिटी की बात की है और उस ट्रेसेबिलिटी के साथ जब हम ने पॉलिसी में बलूचिस्तान की भी और नेशनल पॉलिसी में दोनों में हमने ये चीज़ की इसकी प्रोविजन रखी है, ई गवर्नेंस, सिंगल विंडो ऑपरेशंस, ऑल डेटा दैट विल बी। और जो एक्वाकल्चर एस्टेब्लिशमेंट है उनका डेटाबेस होगा, उनको जियो टैग किया जाएगा। जियो टैग मीन के उनका जब रजिस्ट्री करेंगे वो उनकी भी लोकेशंस और सारे जो है वो वेयर अबाउट्स आपके वो इंटीग्रल पार्ट होंगे उसकी रजिस्ट्री के। once this single registry, this वन रजिस्ट्री के साथ जो है आपकी इस्टेब्लिश हो जाएगी, जो कि फ्यूचर में होगी। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसका बलूचिस्तान का कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन प्लान डिटेल वो भी बना दिया है, और कुछ उसके साथ साथ इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जो इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए ना पॉलिसी की प्रोविजंस को, इंक्लूडिंग दिस सेगमेंट जो डिजिटलाइजेशन का है और ई गवर्नेंस का। पंजाब इस वक्त थोड़ा सा एडवांस है फिशरीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बलूचिस्तान के अंदर कुछ फंडिंग एलोकेशन थी जो कि फिर बाद में पीएसडीपी में इस साल नहीं हो सकी, पिछले साल कुछ थी तो। लेकिन एफएओ इज ट्राइंग के ये वाला एस्पेक्ट जो डिजिटलाइजेशन का, ई गवर्नेंस का, उसके अंदर ये चीज़ें ले आए। और उसमें जब कोस्टल एक्वाकल्चर को वहाँ पे ऑपरेशनलाइज करेंगे और एक्वाकल्चर एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो ये सारा इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आ जाए केपी में। केपी में जो हमारा एग्जिस्टिंग मैपिंग की स्टडी चल रही है वो भी उसके साथ उसकी पूरी जीआईएस प्रोफाइलिंग हो रही है, जो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी जो आप ट्रेसेबिलिटी के साथ और इन एस्पेक्ट के साथ। अच्छा, अब जो ये एक इनिशिएटिव आपके इलम में होगा जब आपने इसकी बात की, लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर था और इसके अंदर वो होने नहीं दे रहे थे उसको। वजह रीजन बीइंग कि इसके अंदर काफी लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर, जो कि जियो टैगिंग अगर हो जाएगी तो उसके अंदर ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी सिस्टम के अंदर। तो वो जो लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर काफी हर्डल्स थी, लेकिन होपफुली जो फिशरीज एक्वाकल्चर सेक्टर इसकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इस वक्त जो प्रोफेशनल अप्रोच है आ रही है लोगों की, जो इन्वेस्टर्स की, जो दे आर इंटरेस्टेड इन टू दिस, और वो इंसेंटिव्स और उन चीज़ों की जो डिमांड कर रहे थे जो सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस की है, तो उसके साथ साथ ये जियो टैगिंग आई बिलीव के इट वुड बी एन इजी स्टेप एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ईयर्स टू कम, इन नियर फ्यूचर, कि ये उसमें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये जियो टैगिंग जो है, ये अगर आप बात करें ट्रेसेबिलिटी की, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट वाइल्ड कैप्चर फिशरी जो एट सी है, उसमें जो बोट्स का है वो भी डेटा जो है वो भी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केट्स की, यूरोप में और अमेरिका में। पर्टिकुलरली यूरोप की बात कर लें आप, तो उसमें जब हम वीएमएस की बात कर रहे हैं, वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की, तो वो उसकी वहां से उसकी जियो टैगिंग और उसके साथ उसको लिंक हो जाएगा इन फ्यूचर। तो लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर जो है इसके अंदर काफ़ी हर्डल्स आ रही हैं, उसमें भी हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं जियो टैगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। डेटाबेस, यस यू आर राइट, इज ऑलरेडी वेरी प्रायोरिटी सेगमेंट। हमने इवन के इसके अंदर जो हार्बर्स के ऊपर इंक्लूड किए पॉलिसी के अंदर, कि अगर पॉसिबल हुए तो कोई डिजिटल स्कैनर्स आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल स्पीशी कैप्चर नहीं है अगर कैप्चर फिशरी की बात करें। तो उसके अंदर
जब डिजिटल स्कैनर्स और चीज़ें होंगी तो वो जो जो लैंडिंग साइट होगी वो अथेंटिकेट करेगी कि कहाँ से जो है ना, इन एडिशन टू दी वेसल, वो भी उसको अथेंटिकेट करेगी कहाँ से को कैप्चर और किसका क्या प्रोडक्ट आ रही है। तो ये उसके साथ इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। और डेटाबेस जो है इंशाल्लाह, सबसे बड़ा चैलेंज ही डेटाबेस का है। ये इस पे अगर हमारा काम हो गया, जो कि इस वक्त सारे सूबे और फेडरल गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है कि इन फ्यूचर इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लेके आएंगे। और ये चीज़ें जो है ना, हमने इसको एड्रेस करना क्रिटिकली। डेटा जो है, डेटा के ऊपर ही जो है आपका पाइड वालों का भी काफ़ी रोल बनता है। केजिंग की बात करें तो फ्रेश वाटर के अंदर, यस, हमारे यहाँ भी जो है ना, वो आपको पता ही है, इलम आपने जो जिक्र किया। लेकिन सी के अंदर जो है एफटीपी ने, आपके इलम में हो गए शायद, केजिंग के लिए एक अटैम्प्ट की थी जो कि सक्सेसफुल नहीं हो, ये म्यानी और के अंदर लास्ट ईयर जो है वो जब समंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ उसका, तो उसके अंदर वो बह गए। तो वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, उसका इस कॉस्ट इंटेंसिव सोल्यूशन एट सी। लेकिन अगेन इट इज पॉसिबल, यस, बट इन द फ्यूचर अब हमारा ज्यादा फोकस ये है कि टू ऑपरेशनलाइज जो स्मॉल होल्डर्स को कोई एलोकेशन हो जाए जमीन। पंजाब में भी इस पे काम हुआ है और बलूचिस्तान में भी, कि जो इसके श्रिम्प फार्मिंग की तरफ हम उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की तरफ लेके आए। एक तो ये उसमें कोस्टल एक्वाकल्चर का है। कैज फार्मिंग का हमने प्रोविजन रखी है फ्रेश वाटर के हवाले से, यस देयर, उसमें हमारी प्रायोरिटी है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के इस वक्त इस फेज में 10 ईयर की जो पॉलिसी है उसमें एट सी अगर एक नए एक्सपीरियंस में कॉस्ट के ऊपर जाएं तो हम वाई नॉट हम फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स के ऊपर फोकस करें। तो जो बलूचिस्तान है उसके अंदर हमने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की के लिए रखा है, और इस साल की एलोकेशन में उनकी फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज की मैपिंग जो है वो उन्होंने एडवर्टाइज भी कर दिया, उसका टेंडर जैसा अंडरवे। वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की तमाम के रिजर्वायर्स की इसकी डिटेल मैपिंग कर रहे हैं जी, और वो सारा जीआईएस मैपिंग के साथ। जो कोस्टल एक्वाकल्चर के हवाले से हम एक प्रोजेक्ट इन नियर फ्यूचर दिस ईयर इन 2026 इंशाल्लाह ऑन द सिमिलर पैटर्न ऑफ केपी वो हम लेके आएंगे। उसके अंदर जो है हम कोस्टल एक्वाकल्चर की डिटेल प्रोफाइलिंग करेंगे, और उसके ऊपर जो पॉलिसी के अंदर एनविजन किया है स्मॉल होल्डर एलोकेशन का, वो उसके साथ लिंक करके बेनिफिशियरी का भी हमारी ये विजन है, अगर ये कामयाब हो जाते हैं हम, अगर पॉसिबल, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस पे कि उनको बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करके उसके साथ लिंक करें, लैंड एलोकेशन करें लीज के ऊपर, और उस लीज पीरियड में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी उनकी। और 1 एकड़ के ऊपर जो है अगर एक्वाकल्चर को श्रिम्प फार्मिंग या कुछ पॉकेट्स के अंदर हमने उसके अंदर क्लासिफाई किए हैं, पॉलिसी में दिए बेसिक, लेकिन डिटेल मैपिंग में उसकी डिटेल वर्जन आ जाएगा। तो उसके अंदर उसको कोस्टल एक्वाकल्चर में उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर सजेस्टेड एरियाज of intervention. Any other question, please? First of all, thank you very much for insightful and interesting discussion. मेरा जो सिंपल से अप्रीहेंशन है, पाकिस्तान हमेशा ही मेरे ख्याल से मार्केट में लेट एंट्री करता है, जो मेरा सबसे पहले, मतलब ऑलरेडी मार्केट कैप्चर हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू फिशरीज एंड देयर आर सो मेनी कंपिटिटर्स देयर। तो उस कंपटीशन को आप कैसे टैकल करेंगे? उसके लिए कोई पॉलिसीज पे फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा? एंड सेकेंडली, एक्वाकल्चर में बहुत सी और भी जो है प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल एंड डिमांडेड आल्सो, जैसे प्रॉन्स हैं, और उसमें डिफरेंट किस्म की, अभी हम पाकिस्तान में क्योंकि कराची में लोग ज्यादा उसको पसंद करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी, लोबस्टर्स हैं शायद, इस तरह की बहुत सी। उसके लिए भी क्या कोई पॉलिसीज बन रही हैं कि अगर हम उसमें कंपटीशंस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कंपटीशन, अगर हम उसमें कुछ करें तो माइट बी वी कैन कैप्चर द मार्केट? और इस जो है इसी में जो है, हाउ कैन वी, द बेसिक माय क्वेश्चन इज हाउ वी विल कैप्चर द इंटरनेशनल मार्केट while we are already late. So, thank you. Thank you, sir. Sir, this is Muhim Mohsin Daud from Public Policy MPhil. सर, मेरा क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। सर, आपने पहले कहा कि हम फिशरीज को बहुत एक्सपोर्ट करते थे यूएई और बाकी जो मुल्क हैं, लेकिन अब हम उस तरह एक्सपोर्ट नहीं करते। अब जो है वो कंपटीशन में खुद आए हुए, तो क्या वो खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए जो कि वो हमसे भी नहीं मांगते इस चीज़ के बारे में, जो कि अक्सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये चीज़ होती है, ट्रेडिंग होती है। और दूसरी बात सर ये कि जिस तरह आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ या बाकी कैपेसिटीज़ है, अब अगर हम फिशरीज़ की या मेरीन की डिपार्टमेंट हम दोबारा से कराची या इस तरह समंदरों पे हम इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आई थिंक बिफोर दिस के हम ये देखे जाए कि क्या हम इस चीज़ के साथ हम खुद सिंसियर भी है नहीं है, क्योंकि शायद डिपार्टमेंट एग्जिस्ट भी कर रहा हो।
लेकिन हम उसको नेशनल प्रायोरिटीज़ में इन चीज़ों में नहीं लेके आते। तो इस पे मेरा एक कंसर्न। अस्सलाम वालेकुम सर। हियर इज़ मुस्तफ़ा कमाल, एमफिल पब्लिक पॉलिसी। सर ये क्या एक क्वेश्चन है मेरा या एक सजेशन के लिए सर। हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, मिनी डैम है या आर्टिफिशियल लेक्स है सर, क्या हम इस तरह नहीं कर सकते कि डिफरेंट ब्रीडिंग्स हैं, हम वहाँ पे इंजेक्ट करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ से जो आउटपुट हमें मिलता है हम एक्सपेडाइट करें? या पहले से इस तरह कुछ हुआ है या हम कर सकते हैं कि फिशरी का जो है आउटकम हमारे साथ ज़्यादा हो जाए? ठीक। We are always concerned about the fiscal space of the country और economy of the country। तो अब 20 years की टैक्स हॉलीडे जो है ना वो इस सेक्टर को दे रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अगर 20 इयर्स की टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं उसकी क्या एस्टिमेशन बनती है, वो एक जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो हॉलीडे जो है, वो ये ना कि एक और एक्स्ट्रा जो है वो बर्डन इकोनॉमी के ऊपर आ रहा हो इसका। तो इसको मतलब देखें इसके साथ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा ये 20 इयर्स के टैक्स हॉलीडे जो है। देखें, मैं आपके लास्ट सवाल से पहले शुरू कर लेता हूँ टैक्स हॉलीडे, और साथ साथ ग्रेजुअली हो जाएगी सवाल एड्रेस। जब टैक्स हॉलीडे की बात करते हैं, किसी भी सेक्टर को जो अंडर डेवलप है उसको डेवलप करना है ना, इस वक्त तो ये रिकग्निशन ही नहीं है कि ये अंडर, इसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये एक मिथ है। और ये मिथ ऐसी मिथ है कि 1960s में यूएन ने डिक्लेयर कर दिया कि मालदीव के अंदर टूरिज्म हो ही नहीं सकता। मालदीव की एक जजीरा है छोटा सा, आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद जितनी 10 लाख की पॉपुलेशन है, यू आर अवेयर ऑफ। और कुछ शायद किसी ने विजिट भी किया हो इन दिस हाउस इन टूडेज पार्टिसिपेंट। तो आज वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मालदीव। इसी तरह के मिथ्स एंड फियर्स थे कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन वो डिटरमिन्ड नेशन थी, उन्होंने पहले पॉलिसी बनाई, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। ये आप हिस्टोरिकली देख लें, इसमें मैंने एक पॉलिसी रिसर्च करवाई थी केस स्टडी के तौर पे, इसकी और केरला की, जब मैं नीमा में था। और वो हर जगह के ऊपर वो केस स्टडी चल रही है। तो हमें ने ये उसके अंदर जो चीज़ें हासिल हुई, जो पता चला कि ये आपकी एक डिटर्मिनेशन है, जो कि आपने भी जिक्र किया कि डिटर्मिनेशन के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो वो, अब ये डिटर्मिनेशन आएगी कैसे? दो चीज़ें हैं, एक एक्टिव मोड से, एक पैसिव मोड से। एक्टिव मोड आपके जो उसमें इन्वेस्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, और पैसिव मोड आपकी जो विजन और ये चीज़ें हैं ड्राइविंग फोर्स के तौर पे, और इनको भी आप एक्टिव मोड में लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो अब ये अचीवमेंट जो है ना ग्रेजुअली होंगी विद द कंसिस्टेंसी, कि हम चीज़ों को लेके चलें। और जो कंटिन्यूअस जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। आप थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, फिर हाल्ट करेंगे, शायद फिर कुछ सांस लें, नीचे भी चले जाएं, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो वेरियस अप्स एंड डाउन होंगे। माजी में हमारी एक्सपोर्ट थी, यूएसए की बात की थी मैंने, तो यूएसए की मार्केट बड़ी मार्केट थी श्रिम्प के वाले से, यूएई नहीं। तो वो हमारी ख़त्म हो गई, वजह के और प्लेयर्स आ गए। हमारे जो इंटरनेशनल बैरियर्स थे ना ट्रेड के, जैसे सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, जो डब्ल्यूटीओ के बैरियर्स हैं, उनको अगर आप स्टडी करें साथ में तो डिटेल के अंदर, इसमें पॉलिसी में भी उसको नरेट किया हुआ है। तो वो बेसिकली उनकी वजह से हमारी मार्केट श्रिंक हो गई। और इस वक्त ये एक मिथ पाई जाती है कि यार ये सेक्टर का तो वैसे ही हमारे जो फिशरीज के रिसोर्सेज है वो ज़्यादातर मैरीन के हैं जो डोमिनेट करते हैं, और जो कैप्चर फिशरी है वो वैसे ही नापैद हो गई है, वो मतलब बिल्कुल कम है, उसके ख़त्म हो गए रिसोर्सेज। लेकिन उसकी इंटायर समंदर की डायनामिक्स अलग होती है ना, पूरे इकोसिस्टम की। जो 15 साल पुरानी रिसर्च है आप कैसे आज अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डायनामिक्स इंटायरली डिफरेंट है। तो नंबर वन, ये एक अप्रोच साइंटिफिक उसके स्केल के ऊपर लेके आनी है। दूसरा, उसको जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उसमें अनसस्टेनेबल है, उसके अंदर जुवेनाइल कैच है और इश्यूज है जो रिपोर्ट हैं पॉलिसी के अंदर, और उनके लिए मैयर्स भी दी हुई हैं। अब इन्हीं वजूहत की वजह से हमारी जो प्रैक्टिसेस ठीक नहीं थी, वो फिश जो है उस ग्रेड की नहीं होती थी, वो उसके अंदर जब करते थे वुडन बोट्स के अंदर, ये एक डिटेल है ना, मैं उसमें नहीं जानना चाहता क्योंकि पॉलिसी के ऊपर वो कर रहे हैं, ये जरा टेक्निकल एक्सपर्टीज की तरफ चली जाती हैं चीजें, नैरो डाउन इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर जो डिटेल ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं ये उसमें चले जाते हैं। पॉलिसी लेवल के ऊपर ये है कि ये इश्यूज हैं कि जो प्रैक्टिसेस हमारी नॉट एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें जो बात ये हो गई तो उसके अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है कैच का, प्रोसेसिंग का, वो नॉट, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। जब उसको हम अप टू द मार्क लेके आएंगे, इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, नो इन्वेस्टर्स आर रियलाइजिंग कि हमारा इस वजह से बड़ा नुकसान हुआ है और इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, तो हम इसके अंदर अपना
इंटरनेशनल पैकेजिंग के अंदर जो कैप्चर कर रहे हैं उसके इमीडिएट प्रोसेसिंग की जो है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिसेस लेके आ रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब इंप्रूवमेंट ऑफ द फिशिंग वेसल्स ऑल दैट। और जब आप कैप्चर के अंदर इसमें फार्म फिशरीज में आएंगे तो वहाँ पे भी उसके अंदर कोई डिजीज कंट्रोल है, कोई आपके अगर कोई और थेरापेटिक्स वगैरह जो है वो अगर आपके उसका यूज है वो हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को ऊपर ना जाए, तो उसके लिए टेस्टिंग क्वालिटी सारी उसकी सर्टिफिकेशंस है। जब आप ये सारी चीजें अपनी प्रोडक्ट के साथ उसकी टैगिंग के साथ उसकी ट्रेसेबिलिटी के साथ कि ये फलां जगह पे प्रोड्यूस हुआ, इसकी ये न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो सारा एक प्रॉपर लेबलिंग के साथ आपकी चीजें प्रोडक्ट मार्केट में करेंगे तो मार्केट आपकी क्रिएट होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है आज कितनी है, 22 करोड़ से ऊपर है, 25 करोड़ हो गई। तो पहले जो है हम कह रहे थे जब हम स्कूल गोइंग थे तो उस वक्त 1981 की सर्वे में 8 करोड़ 7-8 करोड़ थी ऐसे। अभी तो आपका बर्थ रेट भी कम हुआ है, उस वक्त बर्थ रेट ज्यादा था। फ्यूचर में भी तकरीबन ये मोरलेस इतना बर्थ रेट रहेगा अगले 20 सालों में, अगली एक जनरेशन और, तो ये तकरीबन 40 करोड़ क्रॉस कर जाएगी अगली जनरेशन में, 15-20-25 सालों के बाद। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी जो ग्रो हो रही है, लैंड तो उतनी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उतना ही है, वो भी मतलब एक आपका जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड सिस्टम है वो होना है। आपके डाइटरी ट्रेंड्स पाकिस्तान में चेंज होने वाले हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो आपको इसको पहले डोमेस्टिक कंजप्शन की तरफ भी चाहते ना चाहते हुए जाना पड़ेगा इन फ्यूचर, ये मेरी आज की बात याद रखिएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड सिस्टम फर्स्ट रिक्वायरमेंट एट द डोमेस्टिक लेवल, जो आप सोच भी नहीं रहे वो ऑटो क्रिएट हो रही है। आपने आज से 20 सालों पहले आईटी का इस सेल फोन का कोई सोचा था कि इसके अंदर मल्टीपल आप आज वीडियो कॉल और ये सारा कुछ कर रहे हैं? नहीं सोचा था, इट वाज नॉट पॉसिबल। आज ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये आ गया। अब वो कुछ चीजें हैं जो पैसे मोड में हमारी तरफ आ रही है वो हम रियलाइज नहीं कर रहे। इट्स अ नीड दैट हैज बीन अराइजन डोमेस्टिकली, देन इंटरनेशनल मार्केट रेवेन्यू के साथ जब आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करेंगे। अभी आपका 120 टन हुआ वो एक्सपोर्ट हो गया श्रिम्प, वियतनाम, चाइना चला जाता है, अगर यूएसए या दूसरी मार्केट में जाए तो वो उनसे अपनी और प्रोडक्ट बना के आगे सेल करते हैं, वो भी पूरी ग्लोबल ट्रेंड है ना इसके। तो प्रोडक्शन डिमांड इज देयर श्रिम्प की, चाइनीज आर दे आर वेरी इंटरेस्टेड। जब आपकी प्रोडक्शन होगी एक्सपोर्ट होगी तो जो एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली ओनली द श्रिम्प अगर आप फोकस कर लें, आई कैन गारंटी यू कि अगर आप जो हमने बलूचिस्तान की पॉलिसी में विजन दी है, जो नरेट की एग्री की है, उसकी बेस पे अगर आप कोस्टल एक्वाकल्चर अगर श्रिम्प के साथ डेवलप करते हैं 2 लाख एकड़ पे अगले 20 सालों में, तो आप $10 बिलियन से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपका वहीं से बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन कर लें, अभी जो कैलकुलेशन आप करें माइनर सी, जो हमें कोटा एलोकेट हुआ है ट्यूना का, और ट्यूना कैच को अगर हम प्रॉपरली रिपोर्ट करें, वो पूरा ट्यूना कैच जो है हमारा जाके बिकता है, वो बगैर उसके बाटर ट्रेड होती है जो कि मतलब आपके सिस्टम में भी नहीं है कस्टम के, वो ईरान से जाके ना और एक्सपोर्ट होती है। ट्यूना हाईली डिमांडेड, और हमारे यहाँ रिपोर्ट कम होता है उसका डेटा, और सारा मोर देन 80% जो है ना उधर से बाटर ट्रेड से चला जाता है। और वो बाटर ट्रेड जो है वो रिपोर्ट कहाँ पे हो रही है, वो उनकी तो एरिया कम है ट्यूना का, ईरान का हमारा ज्यादा है। तो वो जो एरिया समंदर की बात करें, वो उनके कैच के अंदर उनकी एक्सपोर्ट के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारे नहीं रिफ्लेक्ट हो रही। कैच तो हमारा है, जब उसको आप रेगुलराइज करेंगे तो आपकी जो रिफ्लेक्ट होगी उसके अंदर होगी। जब आप इंसेंटिवाइज करेंगे इंडस्ट्री वालों को, जो वो उनको रिलीफ देंगे, ट्रस्ट डेवलप होगा और चीजें वो प्रैक्टिकली करेंगे, उनको प्रॉफिट मार्जिन नजर आ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन जब उनको होगा तो वो एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट होगी आपकी कंट्री की जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा, आपका नेशनल जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। सो दिस इज द डिविडेंड, एंड उसकी जो डायनेमिक्स है वो पाइड के जो रिसर्चर्स है उनसे ज्यादा शायद मैं नहीं जानता कि वो ये जो एक इफेक्ट है ना, इसको हम भूल रहे हैं कि ये इस तरीके से लिंक है इसका टैक्स हॉलीडे के साथ, बड़ा गहरा है, एक तो डेटा के साथ और दूसरा एक्सपोर्ट के साथ। हमने ये पॉलिसी जो नेशनल पॉलिसी है, दिस इज बेसिकली एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो एक्सपोर्ट इससे होगी, एक्सपोर्ट वालों को अगर आप रिलीफ देंगे तो एक्सपोर्ट होगी ना, एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आएगा तो वो आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन शेयर, उससे आपकी करेंसी जो है स्टेबल होगी। एम आई राइट? तो ये चीजें हैं। जैसा बड़ी अच्छी आपकी कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन थी,
मेरे आपसे सिर्फ एक क्यूरी है कि अगर हम श्रिम्प को अपनी एक्सपोर्ट कमोडिटी के तौर पर, ये प्रोडक्ट लाइन को अगर हम टारगेट करें, तो इस वक्त हमें जो मेन इशू है प्राइवेट सेक्टर को, वो सीड और फीड, इन दो जो कंपोनेंट हैं प्रोडक्शन के, इसके हवाले से उनके चैलेंजेस हैं। तो इस पॉलिसी में आप इन दो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्या सुजेस्ट करते हैं कि हाउ प्राइवेट सेक्टर कैन एड्रेस these two challenges to make this shrimp farming more compatible, और इसके साथ फिर एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा ये कि जो जिन मार्केट्स के अंदर हम इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे कंपटीटर बैठे हैं, तो इसकी इसी से रिलेटेड ही है कि इसकी कॉस्ट कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, सो दैट वी कैन मेक ओवर स्पेस इन द एक्सपोर्ट मार्केट। थैंक यू जी। कैनी साहब, जो कॉस्ट के हवाले से जो बड़ा एक सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है, 120 मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुई, जो एक नॉर्मल प्रोडक्शन के साथ ली है पंजाब में 100 एकड़ पे, जो अब स्केल अप कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट उसको। और जो एक्सपोर्ट जो है वो भी उसकी फौरी तौर पे उसकी उन्होंने जो प्रोड्यूस थी उसको परचेज कर लिया था। अब जो इंटरनेशनल डिमांड आ रही है, इसकी एविडेंस ये है कि एक आपका जो एक्वाकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नया क्रिएट हुआ है, यूनिडो का भी उसमें ताउन शामिल है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, और साथ में ये एक्वाकल्चर की जो एक फार्म है, एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर तमाम इंटीग्रेटेड फार्म है, अरशद अजीज साहब का, कराची में घारों पे मैंने रिसेंटली विजिट भी किया था। उन्होंने सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, एक से दूसरे का यूज़ है। और उसमें फ्रेश वाटर की श्रिम्प हैचरी, फ्रेश वाटर श्रिम्प हैचरी वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और फ्रेश वाटर श्रिम्प की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अभी जो आपका श्रिम्प बिका था वो था कोई 1200 रुपये पे, जो उन्होंने एक्सपोर्टर ने ले लिया था, खरीद लिया था सारे का सारा, और वो बहुत कम प्रोड्यूस था, मतलब इट्स काइंड ऑफ नेग्लिजिबल। तो इसको स्केल अप करेंगे। इस वक्त की जो एग्जिस्टिंग जहाँ पे एक्सपोर्ट जा रही है, तो वहाँ पे खपत आपकी है, डिमांड इज देयर। जो कॉस्ट फैक्टर की आपने बात की, तो कॉस्ट फैक्टर जो है इसके अंदर ये जब आप देखें, एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, और उसके अंदर कॉस्टिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी होती है, एक्सपेंसेस ज़रा थोड़े से एक्स्ट्रा भी होते हैं, चीज़ों के कंसल्टेंट हैं, दीगर है। तो प्रोजेक्ट जब होता है। जी, तो उसके अंदर जो है जो सेविंग का आया है वो अच्छा खासा, उसके अंदर आरओआई आया है। उसके अंदर जो आरओआई पीरियड है वो सेकंड क्रॉप में या थर्ड में उनका निकल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करते हैं उसको, आप अगर हाई इंटेंसिटी की तरफ जाना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्शन मतलब एरिया कम और उसको ज़्यादा इंटेंसिफाई करके कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो वो उसका थोड़ा सा आरओआई लेट हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा, सॉरी, उसका आरओआई जल्दी हो जाएगा उसमें, लेकिन आपकी कॉस्ट फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। तो कॉस्ट, क्योंकि हाई कॉस्ट इंटेंसिव है ये, तो उसी तरह प्रोडक्शन के साथ इसका लिंक है, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी हाई, ये इवन मोर देन 50% प्रॉफिट रेशो इज देयर। बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी है या बिजनेस मैन है, वो कभी भी आपको प्रॉफिट तो शो नहीं करेगा। ये सक्सेसफुल ट्रायल में आपको निकला है, या और भी हमने जो इसके ऊपर ग्लोबल एक्सपीरियंसेस और चीज़ें लर्न की हैं, तो इस प्रॉफिट मार्जिन इज देयर एंड वेरी रीजनेबल प्रॉफिट इज देयर। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। माजी की स्टडीज के अंदर ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा। हाँ, उसके इसके साथ लिंक है कि लोकल प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फीड। अब सीड के हवाले से भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जंतर की एक वैरायटी है जिसके पत्तों से वो ग्राइंड करके और वो उसकी फीड बनाते हैं, इसका श्रिम्प का। वो भी उन्होंने कुछ जंतर ग्रो किया अभी ये गारो वाले फार्म पे। तो वो भी अब जब आहिस्ता जैसे जैसे वो उन्होंने मलेशिया से सीखा, वहां से उनको एक्सपीरियंस मिला कि भाई ये भी एक ऑप्शन है इसका। जूं जूं ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होंगी, वो चीजें आके इंटीग्रेट होती रहेंगी, लोकल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, लोकल सोल्यूशन के लिए आपको जो इक्विपमेंट और चीजें हैं उनके ऊपर इंसेंटिव देना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, टैक्स हॉलीडे देना है हमने। वो जो चीजें हैं उसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जीरो रेटिंग की है, आपके इलम में होगा, काफी सारी चीजों पे जो इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर एक्वाकल्चर डेवलपमेंट लास्ट ईयर, इसी 2025 की बात करें, 24-25 में, फिजिकल ईयर में। तो वो नेशनल टैरिफ कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसके ऊपर जो है वो इसको सब्सिडाइज की है, चीज़ों को सब्सिडाइज का लफ्ज़ वो आप उसको कर लें
कि उसको जीरो रेटिंग कर दिया। और जो अगर एसडीजी की हम बात करें तो उसके अंदर है हार्मफुल सब्सिडी, वो नहीं दे सकते आप, लेकिन जो आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते जा सकते हैं तो उसके ऊपर आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो देर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल with the international policy instruments. There is no limitation on insurance, और इंश्योरेंस आज तो हर चीज की इंश्योरेंस हो रही है, तो there is no limitation, there is provision। और इसके साथ साथ जो है हमने बल्कि जो फिशिंग वेसल को जो है उसको एज कंपनी, जैसे शिप एक कंपनी के तौर पर ट्रीट होता है, तो उसको उस मॉडल के ऊपर लेके आए हैं बलूचिस्तान की पॉलिसी में भी, नेशनल में भी। और जो फिशरमैन है उसकी रिकग्निशन की है, उसको साथ में जब वो इंडस्ट्रियल वर्कर होगा तो उसको ईओबीआई का बेनिफिट मिल सकेगा। ईओबीआई का बेनिफिट इस वक्त, वैसे पेंशन जो नॉर्मल पेंशन इंस्टीट्यूशनल होती है उस पर क्वेश्चन मार्क है, ये जी पेंशन बंद हो रही है भी। जो ईओबीआई इज अ बिग इंस्टीट्यूशन, उसके जो अपने रिसोर्सेज है, उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, मॉडल है। तो ईओबीआई का जो है वो अगर वो उसके साथ लिंक हो जाता है, जो हमने उसके अंदर प्रोविजन बनाई है, तो क्या होगा कि अगर कोई एक बंदा 6 महीने एक बोर्ड पे काम करता है, 6 महीने अगले पे, और वो डिजिटली लिंक है, तो उसके वो ईयर्स काउंट हो जाएंगे। एट द एंड उसको ईओबीआई की प्रोविजन होगी। अगर इन केस ऑफ एनी डेथ, और वो उसकी बीवी को, उसकी जो मतलब इवन अनमैरिड बेटी को, वो उसके बेनिफिट, उसकी वो ट्रांसफर हो जाती है चीजें। तो ये भी चीजें उसके अंदर हम लेके आए चीजों के सिस्टम के अंदर के ग्रॉस रूट लोकल कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मैक्सिमम हो सके। अब उस पर भी काम हो रहा है। हमारे जो लीगल एक्सपर्ट थे जी कि इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करें, वो अभी लेजिस्लेशन और रूल्स के अंदर उनको लेके आ रहे हैं चीजों को। तो वो सिर्फ पॉलिसी में तो आपकी विजन है ना, तो आप उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना, थ्रू लेजिस्लेशन और थ्रू आपकी जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस मैकेनिज्म, वो एक दूसरे इदारे को इंटरलिंक कैसे करना है और रूल्स में कैसे। तो अभी हमने वो रूल्स भी ड्राफ्ट किए हैं उसके बलूचिस्तान के। तो अब नेक्स्ट जो है नेशनल लेवल पे बारी है। ये सारा इंटीग्रेटेड सोल्यूशन होता है। हम खाली पॉलिसी ले आए, स्टैंड अलोन छोड़ दे, उसका नहीं, वो उसको कोई ना कोई कहीं पे उसको सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशनलाइज कर। इस ऑपरेशनलाइजेशन के अंदर आप लोग रिसर्च करें कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, कुछ तो सजेशन दें। अपॉर्चुनिटीज। ये देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मेरे ख्याल है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, न्यू टॉपिक था, बहुत ज्यादा डिस्कशन जनरेट हुई। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया इस डिस्कशन को। थैंक यू ऑल द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट और जिन्होंने इन पर्सन इनवाइट किए इधर आके अटेंड किया इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें थी, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन हम उनको सबको अभी नहीं करते क्योंकि हमारे इंटेंडेड टाइम से भी इतनी इंगेजिंग डिस्कशन थी कि हम उससे भी बहुत आगे जा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे गेस्ट के डॉक्टर कुंवर मोहम्मद जावेद इकबाल का। उन्होंने स्पेशली इतना ज़्यादा वक्त भी दिया और एक नए एरियाज के ऊपर हमें एनलाइटन भी किया। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट।